In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Dear friends, next question number 5. Our language of question number 5. The number of cars sold during 6 days. Number of cars selling during 6 days of a week, यानी पर्टिकुलर वीक की किसी 6 डेज में नंबर ऑफ कार्स सोल्ड आउट की है. ओके, इन अ शोरूम इन मुंबई का कोई शोरूम है जिसमें 6 डेज में नंबर ऑफ कार्स सोल्ड आउट किए हैं. सो देन गिवन डेटा, दिस इज डेज एंड कार्स सोल्ड. ऑन मंडे कार्स सोल्ड 75, ऑन ट्यूसडे 85, वेडनेसडे कार्स सोल्ड 60, थर्सडे 50, फ्राइडे 100 एंड सैटरडे 70. ओके, ड्रॉ पिक्टोग्राम for the above data and answer the following questions. इसे भी हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? पिक्टोग्राफ में. ओके, पिक्चर्स में शो ऑफ करना है ये डेटा. ओके, सो देन एंड द क्वेश्चंस. ऑन व्हिच डे वर 100 कार्स सोल्ड? 100 कार्स वर सोल्ड. एंड इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट भी है पार्ट ऑफ द पिक्टोग्राफ ऑन कार्स सोल्ड आउट. ओके, इन 6 days. सो scale for pictograph. scale इसको देते हैं 1 कार इज इक्वल 10 कार के इक्वल होगा. ओके, 1 यानी सिंपल जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 10 कार के इक्वल होगा. ओके, एंड यस हाफ कार में क्या करेंगे इसको 5 को इंडिकेट करेगा. इट मींस हाफ कार होगी वो किसको करेगी? 5 कार्स की इक्वल होगी. नेक्स्ट, equal 10 cars and half car. Half car is equal 5 car. Okay, 1 car is equal 10 car and half car is equal 5 car. So draw the pictograph. Days and number of cars sold. Monday, okay, so on Monday cars sold out by in Mumbai showroom 75.
So we have represent 7.5 car. Okay. On 175. So 7 cars. Complete 7 cars. Next on Tuesday 85. So complete car is 8. Next on Wednesday 60 car. Exactly number of cars 60. So we have drew the 6 cars. Okay, on Wednesday. Next Saturday 50 cars. So we have drew the 5 cars on Saturday. And next Friday 100 cars. So we have draw the number of 10 cars. Okay, on Friday. Sold by the Mumbai showroom. Number of 10 cars. Friday 100. Okay. Next Saturday number of cars 70. So we have drawn the cars number of 7. Okay, now the questions. On which day 100 cars were sold? So 100 cars on which day? Friday. And 100 cars 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So A answer Friday. Okay. Sold the cars 100 by the Mumbai showroom. Next B answer. On which day least number of people prefer to purchase cars? Least day. On Thursday. Okay. 10, 20, 30, 40, 50. Lowest purchase car by the people on Thursday. So answer is Thursday. B answer. Thursday. Next, C. How many cars were sold in this week? Total number of cars in this week में मुंबई शोरूम के द्वारा कितनी number of cars sold out की गई? Okay. So we have to count 75, 85, 60, 50, 100 and 70. C answer 75 plus 85 plus 60 plus 50 plus 100 plus 70. Okay. So total sum of the 0 carry 1 8 13 6 19 8 26 so 34 carry 1 3 1 4 so 440 cars sold by the Mumbai showroom. Okay. And listen, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन कर सकते थे, बट यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना था कि ड्रॉ पिक्टोग्राफ, यानी कि ड्रॉ पिक्टोग्राफ भी ड्रॉ करना था, तो ये वाला आंसर इसका आंसर. ओके. एंड ये वाले जो क्वेश्चंस गिवन है इसके एबीसी पार्ट्स, तो ये वाले जो क्वेश्चंस इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते थे, बट लेकिन यहाँ पर ये पिक्टोग्राफ भी यहाँ कंस्ट्रक्ट करवा रहा था
then हमने अपनी कंस्ट्रक्ट किया. Okay, so I hope you are understand now these questions and pause the video, noted it. Dear students, next question number 6, last question from this exercise 16.1. Question language of this question. Swati collected some information about the colors of scooters riding on a street. स्वाति कलेक्टेड कर रही है इंफॉर्मेशन जो स्ट्रीट में स्कूटीज राइड कर रही है उनकी कलर्स का डेटा कलेक्शन कर रही है. ओके, कि ब्लैक कलर की कितनी स्कूटीज थी एंड व्हाइट कलर की कितनी स्कूटीज थी एंड रेड एंड पिंक एंड ग्रीन कलर्स की. सो ओके, सो द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो. सो जो भी इंफॉर्मेशन है भाई कलेक्टेड बाय द स्वाति के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां गिवन है. कलर ऑफ स्कूटी की जो कलर्स थे उसमें ब्लैक, व्हाइट, रेड, पिंक एंड ग्रीन. सो हाउ मेनी स्कूटीज ऑफ ब्लैक कलर? 32, व्हाइट 24, रेड 12, पिंक 36 एंड ग्रीन 60. ओके, सो रिक्वायर्ड ऑफ द क्वेश्चन ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ फॉर द गिवन डेटा. ड्रॉ पिक्टोग्राफ. ओके, यहां पे हमें क्या ड्रॉ करना है? पिक्टोग्राफ. जैसे कि सिमिलर इससे अगले जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है उसमें भी हमने पिक्टोग्राफ की ड्रॉ किया है. सो फॉर द गिवन डेटा फॉर एनी 4 क्वेश्चंस एंड नाउ फॉर एनी 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ. अकॉर्डिंग टू पिक्टोग्राफ की हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं. ओके, ये हमें अपनी तरफ से करने हैं. ऑन वाई हरिया हिज questions. First, which color of the maximum scooters? And next, B, what is the difference between maximum and the minimum number of scooters? And next, C, how many scooters are the all colors? Okay, and how many scooters are the red color? Okay, so first we have draw the pictograph of given this data. Scale 4 pictograph one scooty is equal this symbol. Okay, scooty is equal 4 scooties. Okay, one scooty is equal 4 scooties. अकेला ये जो सिंबल है ना ये 4 स्कूटीज की इक्वल होगा. ओके, नेक्स्ट, एंड हाफ स्कूटी इज इक्वल 2 स्कूटीज. ओके, नेक्स्ट, कलर ऑफ स्कूटी and the number of scooters. First color black, next white, and next color red, pink, and next green. Okay, so number of scooters, black color 32. So this symbol is 4, so 4 8s are 32. So this symbol is 8 times. Okay, so 8 more are 32 scooters. So 8 scooters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Next white 24.
4 जा 24, 5, 6. Okay. Next, red color 12. So 4 3s are 12. 4, 8 and 12. Next, 36. So 4 9s are 36. Pink color. So 9 symbols. Okay. 9. Okay. And green color 16. So 4 4s are 16. So this symbol is 4 for green color of scooties. So 1, 2, 3, 4. Okay. And now questions. Which color of the maximum scooties? Which color of the maximum scooties? Black 32, white 24, red 12, and 36. So answer is pink. Maximum scooty of which color? So pink color. Okay. So number of scooties of pink color is 36. So answer A. Pink color. Which color? Okay. So pink. And next B. What is the difference between maximum and minimum number of scooties? Maximum number and minimum number. So maximum is 36 and minimum number is 12. So difference 36 minus 12 is equal 24. Okay. So B answer. Maximum 36, minimum 12. Okay. So 36 minus 12 is equal to 24. Next C answer. How many scooties are the all colors? Total colors की इसमें कितनी नंबर ऑफ स्कूटीज है? हम क्या करेंगे आपको? Sum of all the colors of scooties. 32 plus 24 plus 12 plus 36 plus 16. Okay. So 6 is 12, 2, 14, 18, 20, carry 2, 3, 3, 6, 7, 2, 9 or 3, 11. So 120 scooties. Okay. So 120 scooties. And last D answer. How many scooties are the red color? So number of scooties of red color 12. Okay. So answer this is 12 for D part. Okay. So 12. 4 questions based on the pictograph. इसी pictograph